ویلکم بیک اے ٹی وی مارننگ وتھ فرح میں خوش آمدید. گزشتہ عید مبارک جناب. آج ہمارے ساتھ جو ہیں مس ورلڈز موجود ہیں, مس پاکستان ورلڈز موجود ہیں, جس میں میاں صدیق ہیں, مس پاکستان ورلڈ ہیں, سیدہ فضا نقوی ہیں, مس پاکستان ورلڈ ہیں, اور صبا چودھری ہیں, مس پاکستان سپریم ہے 2025, اینڈ حسن عبداللہ ہیں مسٹر پاکستان ہیں. ہم اپنی گفتگو کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا. لیکن ایک میرے ذہن میں ایک چیز فلیش کی, نام پورا سیدہ فضا نقوی. دس نام ٹیلز می کہ آپ جو ہیں ایک خاصے مطلب ایک ایسی فیملی سے ہیں جو جہاں پہ یہ چیزیں الاؤڈ نہیں ہوں گی, اور بالکل نو ایریا ہے. سو پھر یہ کیسے ممکن ہوا؟ بس میں اصل میں یو ایس میں ہوتی ہوں, تو میری لائف ٹوٹلی وہاں پر ہے. یہاں پہ ہے میری فیملی, اینڈ آئی تھنک میرے سبلنگس دے آر ویری سپورٹیو آف دس. سو اینڈ آئی ایم ڈوئنگ, آئی تھنک ہر چیز نا ماڈیسٹی سے اور آپ رسپیکٹ سے کر سکتے ہو, ویدر دا امیج آف دس پیجنٹری از ریئلی نیگیٹو ان دا سوسائٹی, بٹ اف یو آر ڈوئنگ اٹ ود ماڈیسٹی اینڈ یو ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ رانگ, دین آئی فیل لائک یو کین گو ہیڈ اینڈ ڈو اٹ. سو فیملی کی طرف سے کوئی ایز سچ ریزسٹنس نہیں آئی, جس طرح کی ابھی ہم بریک سے پہلے ذکر کر رہے تھے کہ اوئے I mean, they are supportive, they are there. they are supportive. So no, Mia, your family also supported you? Yeah, especially my mom. My mom is here with me in Pakistan. She's at the hotel. She usually comes with me everywhere. You're lucky she's not here today, but she's everywhere with me. My mom is very supportive. Right. And what about you, Sabah? ویری سپورٹیو, کیونکہ میں نے جاب بھی کی ہے, کبھی مجھے منع نہیں کیا, اور میرے فادر جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. تو اچھا, میں نے یہ نوٹ کیا آپ پاکستانی فیملیز میں somehow یہ ہم بیلنس نہیں کوئی چلتے ہیں, یا تو بہت زیادہ ٹلٹڈ ہیں کہ بیٹا 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 ایکسٹریمزم, یہاں بیٹی 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 جہاں پر ہے تو وہاں پہ وہ بہت ہی زیادہ ایسا ہے. ہمارے گھر میں زیادہ بابا جو ہیں بیٹیوں کے ساتھ کرتے ہیں, بہت زیادہ, اور بہت زیادہ ایک ہوتا ہے ٹرسٹ, بہت ٹرسٹ کرتے ہیں. کیونکہ میں ابھی کراچی رہ رہی ہوں اکیلے, مطلب فار ڈراماز, آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پروڈکشن ہاؤسز زیادہ ہیں, لیکن انہوں نے مجھے کبھی بھی نہیں روکا. میں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ اپنا گول اچیو کرو, جو کرنا ہے کرو, لیکن اوبویسلی ان کو پتہ ہے, ٹرسٹ ہے, اس لیے. بالکل صحیح. اور حسن, آپ بھی ڈراماز وغیرہ اور ایکٹنگ وغیرہ میں کروں گا کبھی فیوچر میں, ابھی سوچا نہیں ہے. لائک اٹس ناٹ مائی کپ آف ٹی, اٹس لائک ویری لانگ شوٹنگ آورز اینڈ مائی اسکیجول از ویری ڈفرینٹ. سو وہ ایک ڈائریکٹر کا کٹ بادرز نہیں ہے لٹل, بٹ ان شاء اللہ ان فیوچر ایسا نہیں کہ میں نہیں کروں گا, کوئی اچھی اپرچونیٹی ملتی ہے تو آئی ڈیفینیٹلی ڈو اٹ. بالکل صحیح. اینڈ واٹ اباؤٹ یو فضا, آپ نے بھی کچھ سوچا ہے کہ اس کے بعد آپ میڈیا انڈسٹری کی طرف بھی آئیں گی؟ So I have a barrier. I live in US, so I feel like it's not possible to come back and forth. So that is like a biggest barrier for me. So that is it. Yeah. And we are definitely the same goes for you, right? Yeah. That you also have this issue of traveling and too much of going here and there, right? Yeah, I mean, of course I'm going to come back to Pakistan, but it's just hard to do it constantly because obviously it's money as well. It's a long fly and it's a lot of money. So is this just the title and the crown that you get by participating in these pageants, or something else? You also Is this get some prize money or something else which is involved? No, so we don't get any prize money, but we do get a really amazing platform with the title. With the platform, we get to reach such large audiences and various audiences to raise awareness about our advocacies and to show everyone about Pakistan, which is essentially everyone's aim here, to display Pakistan in a positive, fresh light, and that is what the title provides us with. Right. Lekin Sabah, is this an easy journey? مطلب یہ جیسے کہ فیملی نے بھی سپورٹ کر دی, آپ کا بھی دل کیا, آپ نے اپلائی کیا, اور پھر آپ کو بلا لیا گیا ہے, اینڈ فائنلی یو سکسیڈیڈ. از دس دیٹ ایزی؟ نو, اٹس ناٹ دیٹ ایزی, کیونکہ بیکاز ہم میں کچھ تو الگ بات ہے جو ہم اتنے پورے پاکستان میں سے, اور پاکستان بھی نہیں, یو ایس اینڈ یو کے, تو وی آر دا سلیکٹیو پیپل, تو اٹس ناٹ ایزی. اوبویسلی وہ آپ کی اپیرنس دیکھتے ہیں, اس کے بعد آپ کا آئی کیو لیول, لائک بہت سی چیزیں دیکھی جاتی ہیں, ہاؤ یو پریزنٹ یور سیلف, کس طرح سے آپ مطلب لوگوں کے ساتھ بیہیو کرتے ہو, بہت ساری چیزیں دیکھنے کے بعد وی گیٹ دیز ٹائٹلس.
अच्छा, बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज यहाँ पर जो है वो हम सुनते हैं कि पता नहीं जी मेजरमेंट्स होती हैं, पता नहीं अजीब अजीब किस्म की मेजरमेंट्स होती हैं, कोई बहुत सख्त क्राइटेरियाज हैं, उसमें कितनी सदाकत है? इस तरह का जो ये पेजेंट है, हम जिसके साथ काम कर रहे हैं, इस तरह का कुछ नहीं, बिकॉज आई आस्क्ड दिस क्यूरी बिफोर सेइंग यस, ठीक है, मैंने उनसे पूछा कि आपने भी ऐसे ही सुना था? या बिकॉज देयर आर डिफरेंट राउंड्स, स्विम सूट, गाउन और क्वेश्चन आंसर, ये 3 राउंड्स होते हैं हमारे जब हम इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पिटिशन्स के लिए जाते हैं, और वहाँ प्राइस होते हैं, प्राइस मनी होती है, मतलब व्हेन एवर वी गो टू एनी कंट्री, तो वहाँ पे हमारा एक स्पेसिफिक जो है प्राइस, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए प्राइस मनी होगी डिसाइडेड, लेकिन उसमें फिर हमें डिफरेंट राउंड्स में जो है वो विन करना पड़ेगा। तो इसलिए जो स्विम सूट है उसके लिए मैंने क्वेश्चन पूछा था सोनिया से कि मैं तो ये नहीं कर सकती, क्योंकि अगर स्विम सूट पहनाया तो वो तो अपने टाइप का पहनाएंगे जो But the thing is, pageantry has changed, the environment has changed, even in the international barriers changed, yeah. The international pageants, they allow you to cover that, to wear those covered swimsuits. You don't have to wear anything showing your skin. Now it's allowed, really but changed. it's not for every every competition, because Yeah. अभी Miss Grand हुआ था जिसमें वो हमारी जो पाकिस्तानी थी वो काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था, उन्होंने जो है उन जैसी लाइक शी वाज शी वाज वेयरिंग वेरी रिवीलिंग ड्रेस, तो फिर वो रैम्प पे उनकी वॉक बहुत वायरल हुई थी और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म और बैकलैश मिला But था I उनको। think there's nothing to criticize about because they're models. It's their job. They do that daily. हम काम भी करते हैं. It's as a society. Same time we are No, मैं वो बात करने वाला हूँ. representing Islamic हाँ, country. let me complete now. That's what I'm saying. They're models and she's a Christian. She's not a Muslim. But still, ठीक है? जैसे But आप still, सबने yeah. यहाँ पे mention किया ना कि to highlight the Yeah. positive image of Yeah, yeah. Pakistan. So it's Islamic So when Republic of you हाँ, Pakistan. of course, but will be देखो हम representing नहीं, but as a Pakistan. person हमारा right नहीं है ना कि हम किसी पे comment करें, गलत बात है. If she's a Christian and she's not Muslim, so we have no right to She's comment still on her. representing Erica Islamic She is but representing Erica, the but Erica is a Pakistan. Christian. Erica is a Christian. Erica Erica ने ने- बुर्का पहना था, बुर्कीनी पहनी थी. Erica ने- उसको लोगों ने Erica- बहुत praise किया था. She was our first Miss Universe Pakistan. उसने Christian होने के despite she was a Christian, she wore a burkini. और लोगों ने उसको बहुत appreciate तो किया था. अच्छी बात है, तो हाँ. अच्छी चीज़ भी बतानी चाहिए rather than के बंदे नहीं, सिर्फ that's what criticize. I'm saying. Yeah. Yeah. Nobody's Hassan. I'm You not are putting highlighting it in a anyone, negative हाँ, नहीं, मैं context. negative नहीं जा रहा. I बाकी just लोग want- जो हैं don't want to comment on anyone. they I are- don't feel right commenting on someone. they are pointing out in right direction Yeah. because that represent the majority sentiment. मैं यही आपको चीज़ जो बता कि रहा हूँ यहाँ कि वो सही कह पर रही वो हैं. है और पता है कि मैं यही हमें बोल रही हूँ उसको again जरा and again थोड़ा कि सा it's different ज़हन में now. रखना चाहिए. It's different. बिल्कुल, If you don't want to There do are it, different- they will accommodate you. You मैं don't आपसे have to 100% इस ask चीज़ it. पे एग्री करता हूँ आप सबसे, but I just don't want to comment on someone. मुझे लगता है Yeah, that's a we little are wrong. not highlighting Yeah, any I just name. feel like We are it's not just a highlighting. little We're just wrong, saying yeah. कि अब change हो You गया. did mention. अब change हो गया. But for one competition, which I Yeah. mentioned, the Yeah. Miss Grand. Yeah. उसके अलावा जो different हैं It was her choice. If she would have Yeah, it's requested her them, choice. Yeah. they would have let her because now Yeah, but everything is ये open. ये जो क्राइटेरियाज है, ये जो परसेप्शन है लोगों की, It's really ये, old. Do you think the perception of Pakistani people has changed? I don't think so. They don't see it in a new world. That environment has changed vastly. मतलब पहले एक आपका स्पेसिफिक है कि ओके ये राउंड होगा ये राउंड होगा और लड़कियां जाएंगी एंड दे हैव टू डू इट. देयर इज नो like any kind of other choices they have. But now it's everything is changed. Everyone should open their mind and open their brains and see the inside of everything, that they are allowed to choose now. बहुत सारी countries में ये है कि you don't have to show your skin. Even अभी मिस नया जो ये मिस वर्ल्ड हुआ था, they were all wearing saris. Yeah. Even the other country people. So there was a sari round. So everything is getting to the choices of people now. It's not the specific thing that okay this is the round and you have to do it. It's not that anymore. Right. And Mia, because you have come from a society being mother Irish, UK Irish, yeah. So बहुत सारी lineages जो हैं वो mix हो रही हैं आपके एक उसमें आके, है ना? एक Irish and then UK based living and then your father from Pakistan. So do you also associate with these kind of conversations which we were just having, that people having a certain mindset about the dressing of a woman, how a woman should look and appear publicly? Yes, definitely. Still living in the UK doesn't mean that we're shielded from certain things, because at the end of the day, you know, my family's still there. There's still Muslims. There's
so many Muslims, there's so many Pakistanis living in the UK. Yeah. So a lot of people do share that mindset. Yeah. Yeah. So how you deal with that? If it comes to you. I personally am quite confident in myself when it comes to my appearance wise, I would say, and the way that I dress and my style. So I think if my parents are okay with it, then you don't have a right to comment, anyone else. I think my mum thinks I look pretty. I think I look good. So if anyone else wants to comment, then No, the rest of the people also think you look good, mashallah, you look pretty. thank you. So there's no question about that. Thank you. So अच्छा फिजा, जब आपको भी कोई नेगेटिव बैकलैश, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, कोई नेगेटिव कमेंट्स या कुछ इस तरह की बातों का फेस करना पड़ता है या नहीं? लिविंग इन यूएस एक थोड़ा सा एडवांटेज उसका जो होगा ये कि आप इतना नहीं इन चीज़ों के साथ I mean, US deal maybe करते we हो। have a lot of Muslim community, a lot where I live, Atlanta, Georgia. But the thing is, I got really appreciated with this outfit. I wore this on my crown ceremony, and they all commented that she's so, covered, and it's not even. Revealing, she is yes. actually representing Pakistan with the culture of Pakistan. So I really got appreciated. So that's what my motive is. Can we have a look at this dress while you're standing? Yes, because it's a really definitely. beautiful dress, and I think it will Yes. be ये बहुत ही बुरा होगा कि अगर हम ये ड्रेस जो है आप बैठे बैठे जो है वो उसमें हो। तो आपने Yeah. यही पहना हुआ था? Yahi pehna hua tha, and it's like actual dupatta, so that people really appreciated it, that I'm actually representing it in a modest way. Yeah. So And you yes. chose it yourself? Yes. So आप you get to choose your things yourself. आपके लिए Yes. कोई stylist या कुछ लोग होते हैं जो कि इसमें No, help not. करते हैं? I mean, it's very a small platform. Thank I you would very say. much. Thank Thank you very much. Yeah, it's a small platform where you have the choice for now. I think in international, I don't know how they do it, but I think you can choose your outfit in international world. Yes, you can. Yeah, you Exactly. can. Yeah. You can always So- choose your outfit. And is this the dress which you were wearing, Mia, in your crowning ceremony? No, this was actually borrowed from another title holder. Her name is Afshan. She's Miss Pakistan Universal. And I borrowed this dress today from her. But She it was fits wearing you a white. so fine. Thank It you. doesn't look as if it's borrowed. It's I know. perfectly fit. I love it. It's gorgeous. She has everyone here has a great wardrobe, so Yeah. I like to borrow from everyone. So you're supportive. So you lend your things as well. Oh yeah. Yeah. I asked her that can I borrow one of your gowns because I'm running out of the gowns. So Yeah. everybody is. We have become very good friends within this pageantry within 2 weeks. It's been an And amazing there's journey. no jealousy, very known or Nothing, because on the negative comments yesterday, that Miss Universe was supporting me and commenting on behalf of me. So she was like, I am supporting you on the internet. I was like, please go ahead. So yeah, backlash is there, but yeah, we are together. We know what we are doing, nothing negative. So yeah. yeah. Queen helps fix another queen's crown. Exactly. So what kind of backlash is there? With me, it's my name especially, and then with the pageantry itself, it's a negative impact within Pakistan. So they're like, it's a Western thing, go take it back to West, we don't want it here, all that kind of stuff. And then again about the rounds, that did you have to wear the thing the where certain you kind have of to, things. yeah. So I was like, do you see it wearing anything? All of us are in good, modest gowns, so you don't see it. Why are you commenting about it? So yeah, a lot of negative comments. सही अच्छा सबा आपकी सूरत हाल में सबसे फ़र्क है because you're living in Pakistan Yeah. and you're also working media person. Yeah. So you're the only one who will be encountering the ground realities, Yes. face to face. पाकिस्तान में रहना है. पाकिस्तान में रह के you come across this face to face. You have to face it actually. Yes. So ये कैसा है because hostilities भी हैं इसके around और लोगों का एक appreciation भी है. एप्रिसिएशन भी है, लेकिन ज़्यादा जो मैंने देखा है कि इंटरनेट पे दे आर वेरी नेगेटिव अबाउट दिस, क्योंकि उनको लगता है कि वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट कर रही हैं और ये इस तरह के ड्रेसेस पहन रही हैं और मतलब इस तरह की बहुत सारी बातें मैंने कभी किसी ने देखी. मुंह पे भी कहा है या सिर्फ मीडिया? अगर मुझे कोई मुंह पे कहेगा तो मैं तो उनको बता दूंगी कि वी आर हियर टू रेज द वॉइस फॉर ह्यूमैनिटी. ठीक है, हमें ये जो टाइटल मिला ये ऐसे नहीं मिला, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को इस टाइटल के बारे में बताएं, क्योंकि पाकिस्तान में सच बताऊं तो
लोगों को इस टाइटल का पता ही नहीं है कि ये है क्या. वो जस्ट कहते हैं कि ये जस्ट शो ऑफ है और अपनी असल में लोग खूबसूरती जिस दिखा रहे नज़र से हैं. खुद देखते हैं ना औरत को, वो समझते हैं कि सभी लोग मुकाबला हुस्न और सब चीज़ें जो वो उसी नज़र से ही इसी शायद नज़र से देखते हैं. उनको देखी इस जा चीज़ रही का हैं। बैकग्राउंड ही नहीं पता कि हम लोग जो है पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं. वहाँ पे हम पूरी ग्लोबली हम सब सारी जो मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के सबसे लिए जा टफ रहे जो कंपटीशन होता है वो किस कंट्री के साथ, क्योंकि एक रेस का एक अपना वो होता है ना, वी आर ब्राउन पीपल या साउथ एशियन कह लें, और इंडिया से इतनी जो है वो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स जो हैं वो ऑलरेडी आ चुकी हैं, दे आर नोन फॉर देयर जैसे कहना चाहिए ब्यूटी स्टैंडर्ड्स वगैरह वगैरह. तो कुछ इस तरह का भी कंपटीशन होता है वहाँ पे? क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ की जाती हैं. बिकॉज मेरा कोई अभी तक पैजेंट जाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है. लेकिन आप दोनों का है? No. नहीं. She has been to one. She has been. हाँ. But I have quite a bit of pageant experience. Right. So how was that? It was different because obviously it wasn't in Pakistan. It was based in England. And she represented England. Yeah, at that time. Yeah, I represented England. I did Miss Yorkshire, which is like the county where I'm from is called Yeah. Yorkshire. I went to the finals of Miss England, and it was very different. And I think that's kind of what made me want to join the Miss Pakistan world, because I've often felt being mixed that I don't belong in either place. And when I was in Miss England, I was thinking, I don't really relate to many of the girls here. I don't really share the values. You know, so you're representing your country. Right. And the history of England with everything like that, it's just not something that I share. And I thought, ओके हम कंटिन्यू करेंगे अपनी गुफ्तगू को, लेकिन उससे पहले हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद फिर यहीं से रिज्यूम करते हैं. और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ.